Hello and welcome to the post-match presentation of Match 7. And this was Mardan Warriors versus the Bahawalpur Royals. Good game, low-scoring encounter. Eventually, the side chasing won the match by 5 wickets. Before we get to the awards, we'll introduce you to our presentation panel, starting with Mr. Salman Nasir, Chief Operating Officer, Pakistan Cricket Board. Next to him, Mr. Ghulam Hussain Shahid, Chairman, Kingdom Valley. Then Mr. Muhammad Akbar Mughal, Zonal Chief, State Life, Lahore. And last not the least, Mr. Hafiz Farman Ali, Inverix Solar Energy. And now I'll request Mr. Salman Nasir to present the PCB Best Batter of the Match cash award of 25,000 rupees. And goes to none other than George Thomas for his 58 of 39. Another brilliant performance from George, playing an integral part in that chase of 146 to win the match. And winning the PCB Best Batter of the Match. Next up, request Mr. Hafiz Farman to present the Inverix Energetic Bowler of the Match. Cash award of 25,000. Was a tough call. Eventually, the last over decided it. 2 for 17 in 4 overs for Zishan. Mohammad Zishan is the Inverix Energetic Bowler of the Match. I will now request Mr. Muhammad Akbar. He'll be presenting the State Life Best All-Rounder of the Match. Cash award of 50,000 rupees. Going to Khartai for his 14 not out of 13 and 1 for 27 in his 4 overs. Royals didn't win the match, but they had some individual very good performances, and one of them was the Best All-Rounder. Now I'll request Mr. Ghulam Hussain to present the Kingdom Valley Player of the Match. Cash award of 100,000 and also a trophy. And well, George Thomas, got to be 58 of 39. And I also request George to have a quick word with us once he's clicked the photographs. George, back-to-back good performances, leading from the front. Tell us a bit about your innings. You started off low-scoring game, but it was a bit tricky out there. I think in the first innings we bowled well and made it maybe look like a worse wicket than it actually was. As the dew comes down, it obviously makes the pitch flatter and easier to throw my hands through balls. So yeah, it was a good wicket. Was it tough to deal with? You just got a feeling from up there that it was just holding a bit in the surface and it wasn't really coming onto the bat, but when you were trying to hit those big shots? Yeah, I felt the slower balls were gripping into the surface and gripping and turning sometimes. So I think credit to their bowlers. They did bowl a lot of those balls and I found it very hard to get away towards the end of my innings. Adds a bit of pressure that when you are performing up from front and then the side always starts depending on a batter. What is your exact role? You basically seem to be the one who's going to go after the bowling no matter what the score is. Yeah, I think batting in the first 6 overs is the easiest place to bat with only 2 men out, and I've been given the role of making the most use of that, to be aggressive in playing not like strong shots through and over the outfield. So I think that's my role. Enjoyed your innings. Keep it up. Thank you very much. Thank you. Player of the match and the batter of the match. That's George Thomas. Now I'll request the losing captain Ubaid Shahid to please come and have a few words with us, the captain of the Bahawalpur Royals. Bahawalpur has had a good run अभी तक tournament में ऊपर है टेबल में. आज के मैच में जब आपकी पहले बैटिंग थी, obviously नजर भी आ रहा था 60 और 12 ओवर में. क्या चल रहा था प्लान टीम का बैटिंग करते हुए? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें स्टार्ट उस तरह का नहीं मिला. हम बासित अच्छा स्टार्ट दे रहा था हमें थ्रू आउट द टूर्नामेंट. आज जो हम चीज़ लाइक कर गए, थोड़ा सा हमने बैटिंग ऑर्डर भी शफल किया था कि हम चाह रहे थे कि हम ट्राई करें अपने प्लेयर्स सबको कि जिनको चांस नहीं मिल पा रहा. तो ऑब्वियसली हम 10-15 रन छोड़ते जिसका हमें नुकसान हुआ. क्या आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रेशर भी आया था जब बासित जल्दी आउट हो गए तो टीम ने थोड़ा फील किया कि अब यहाँ से कौन परफॉर्म करेगा, कौन हाथ उठाएगा अपना? नहीं, कॉन्फिडेंट था कि हम करेंगे. बासित के अलावा हमारे पास थे कि, लेकिन वो एक मोमेंटम बना था कि बासित हमें बहुत अच्छा देर था स्टार्ट से, तो वो थोड़ा सा लूज़ कर गए, तो जिसकी वजह से हम अच्छा टोटल सेट नहीं कर सकते. फाइट आप लोगों ने अच्छी थी, फिर भी 145 इतना बड़ा टोटल नहीं था, लेकिन आई गेस वेल डन. इवेंचुअली मैच नहीं मिला, लेकिन मोर गेम्स टू कम. जी ऐसे ही. थैंक यू. वेल डन. Alright, now the winning captain, Abbas Ali. He is the captain of the Mardan Warriors.
कल की हार के बाद मुझे लग रहा है कि आपने एकदम सबको टाइट कर दिया। नहीं, बिल्कुल इसी तरह होता है जब टूर्नामेंट में एक तो हमने हारा था, एक जीता था। ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए तो लड़कों ने बहुत अच्छी एफर्ट की। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आपने मैच हारा भी था लेकिन फाइट दी थी। आज भी इस मैच में थोड़ा सा लगा आपको कि 145, 150 बड़ा टफ है चेस करना। जी बिल्कुल, जब टफ लगता है जब 145, 146 लगता है बोर्ड पे, लेकिन हमारा जिस तरह थॉमस और शाहजेब खेलता है तो बिल्कुल बिलीव था अपने बैटिंग साइड पे कि ये इजी चेस हो जाएगा। कहाँ से लाए आप जॉर्ज थॉमस को? बिल्कुल, ये कोच ने उठाया। कैप्टन के लिए अच्छी चीज़ है कि ऐसे आपको अप फ्रंट एक बैटर मिल जाए और साथ में शाहजेब भी, आपको स्टार्ट अच्छा मिलता है। आपको लगता है कि टीम नीचे मिडिल ऑर्डर में उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है और बड़े स्कोर्स बना पाएगी आगे जाके? जी बिल्कुल, मिडल ऑर्डर पे बिलीव है इंशाल्लाह कि, लेकिन 2 मैचेस में पिक नहीं हुए, इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिलेगा। आपकी एक बात तो सही है कि आपका बॉलिंग यूनिट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, खेलते जी रहिए इस बिल्कुल, जिस तरह इरफान और आसिफ ने आज बॉलिंग की है तो बहुत कॉन्फिडेंस हुआ है लड़कों पे। तरह। वेल प्लेड। थैंक यू। Abbas Ali, the captain of Mardan Warriors, winning this match, getting those 2 points, and we will now take you back to the commentary box.